ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Today, beloved Baba, is especially drawing our attention upon about any activity we perform. There should be that spirituality in that. There should be that spiritual touch in that. In whatever thing we do, should always consider ourselves to be spirits, souls. Then those activities would be spiritual activities, and there would not be any sinful actions performed. Otherwise, because of body consciousness, all our actions become sinful actions. So Baba, at this confluence age, has taught us this technique, method. Whatever activity, action you perform, do not perform those actions in being body conscious, but consider yourself to be spirits, souls, who have taken the support of this body and are performing our actions through this body. And there would not be any sinful actions performed. And all our actions would be righteous. We have to go on performing actions. We cannot stay without performing actions. And Baba has taught us this method to be soul conscious, so that all our actions
would become elevated actions. Murli of the 19th of August. Sweet children, you know how to carry out spiritual business when you do everything while considering yourself to be spirits. You souls continue to become voiceless. Question is, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? what is the basis of claiming the inheritance of heaven and the basis of having a high status in heaven? Answer is, कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा. when you become Brahma Kumars and Kumaris, you receive the inheritance of heaven. ऊंच पद का आधार है. However, the basis of your claiming a high status is how much you study. After belonging to the Father, if you continue to study well and become completely pure, you will receive a royal status. Those who don't study fully or have some karmic bondage don't become fully pure, and they leave their bodies in that state. They will claim an ordinary status among the subjects. Om Shanti. The spiritual father explains to you, spiritual children, here you have spiritual business, whereas everywhere else in the world they do worldly business. In fact, the business is of souls. It is souls who study, move, and commit sin through their bodies. And this is why it is said, an impure soul or a sinful soul. It is souls who do everything. At this time, all human beings are body conscious. Instead of considering themselves to be souls, they think, I am so-and-so, and I am doing this business. So-and-so is angry and lustful. They mention the names given to the bodies. This is called a body-conscious world, the world of the descending stage. This is called a body-conscious world, the world of the descending stage. It is not like that in the golden age. There, they are soul-conscious. You are being made soul-conscious. Have the faith that each of you is a soul. I am a soul, and having adopted the costume of this body, I am playing a part. Those actors also change into different costumes and play their parts. The Father says, you souls were at first in the land of peace. Your home is the land of peace. Just as those are limited plays,
So this is an नाम से unlimited इस play. नाटक में All souls come here from the Supreme Abode. सभी They आत्माएं परम adopt धाम में bodies आकर and play their शरीर parts. धारण कर पाठ The बजाती original home of souls आत्माओं का is असूल the घर है Supreme Abode. The home असूल of the actors is here. ओरिजिनल है परम धाम शांति धाम उन एक्टर का तो घर यहीं होता है The original home of सिर्फ वे souls is स्मृति the कराकर Supreme पाठ Abode. बजाते हैं The home of the actors बात बैठ is सकती here. हैं They simply परमात्मा change their dress बाप and play बच्चे their बच्चे parts. रहेंगे ना Father sits here and explains, you are क्या कहते हैं souls. Father says, children, सन्यासी children. बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे Whereas sannyasis don't say this. बाप कहते मैं पतित पावन The तुम Father सभी says, आत्माओं का I, बाप the हूँ purifier, जिसको तुम the गॉड one फादर whom कहते you हो call God the गॉड Father, फादर तो निराकार I'm the है Father of all of ब्रह्मा you विष्णु शंकर souls. को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे God the उसमें Father भी is आत्मा है incorporeal. परंतु उनको Not कहते even हैं Brahma, Vishnu, ब्रह्मा देवताए or नमः Shankar विष्णु can be देवताए called नमः God the कहते Father. हैं They too शिव have souls, but it is said, salutations to the deity देवता Brahma, क्या करते हैं salutations ये to the किसी को भी deity पता Vishnu, नहीं है etc. बाप ही आकर What समझाते do हैं deities तुम do? कैसे ड्रामा No प्ले one को knows समझ this. पाते हो Only the Father comes and दुनिया के explains to लिए you how ऐसे you ही play नीचे your parts आधार according to the में drama plan. दुनिया There is एक just the one world. जिसका चक्र फिरता रहता It isn't. There is hell down लोग below कह देते हैं and another world up मुंह में above. लौट लेंगे There is just the चंद्रमा one में world लौट which लेंगे continues to go around in a बाप cycle. कहते बच्चे People say कितने that they इंसान will buy a plot of land on the moon. पैसों के लिए कहते Father हैं explains, तुम your कितने children शानदार थे have become so समझ गए insolvent. और अभी क्या It is said of the people of Bharat, बेसमझ you were so wealthy इन and लक्ष्मी नारायण के sensible. सारे विश्व में Lakshmi Narayan राज्य था ruled जिसको the कोई whole लूट world. नहीं सकता No one could loot that. वहां कोई पार्टीशन आदि There were नहीं no partitions, etc. there. तो कितने Here, पार्टीशन there are so many partitions. आपस में They have टुकड़े टुकड़े broken करते रहते everything up into pieces सारे and विश्व then के मालिक थे fight over them. सारा आकाश पृथ्वी You were the समुद्र सब masters of the whole world. ग्रहों के The मालिक थे earth, sky, तो and कितने sea बड़े all belong ये to you. किसको भी पता You were the masters of it. It is now भारत ही विश्व broken का up मालिक है into pieces. बाप No one समझाते knows that आत्मा ने जो Bharat पाठ was the master of the world. वो पाठ क्या समझाता है बाबा Father आत्मा को explains जो पाठ मिला the part that each soul receives never wears out. आत्मा का पाठ कभी घिसता नहीं It continues जैसा ही all the time. चलता ही रहता है चक्र घिसता ही नहीं है अभी फिर You are now से मनुष्य once again देवता changing from humans 84 into जन्म लेंगे deities. You will then take 84 births. Your part continue all the time. They never end. चलता रहता है कभी बंद नहीं होता है पाठ क्या है कभी बंद नहीं होता है कोई मोक्ष आदि बातें नहीं No one attains eternal liberation, etc. अनेक शास्त्र The more gurus and scriptures there are, क्या है the more
opinions and dictates they are. हर एक का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बुद्धि है, उस अनुसार करते। अभी देखो ज्ञान में भी ऐसे ही होता है ना, जो बाबा की ओरिजिनल पॉइंट होती है, उस पॉइंट को कितना घुमा के फिरा के सुनाते। तो बाबा कहते शास्त्रों का भी तो ऐसे ही हुआ ना, किसने जो बनाए उसके ओरिजिनल शास्त्र तो रहे नहीं, हर एक जो पढ़ता गया अपनी स्पष्टता अंदर डालता गया तो ओरिजिनल चीज खत्म हो गई। तो बाबा कहते जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती हैं। The more gurus मनुष्यों में and उतनी scriptures शांति there are, the more जहाँ opinions भी जाओ and कहेंगे dictates there मन are. को शांति कैसे There मिले? is so much peacelessness ये देह among अभिमान human से beings. कहते हैं। Wherever you go, बाप people समझाते ask, हैं how can मन we और attain बुद्धि ये peace of दोनों mind? मिलके They say this out of क्या है? body consciousness. Father बाकी ये explains सब शरीर the की mind है। and intellect आत्मा कहती है are मेरे organs मन of को the शांति soul. कैसे मिले? All of वास्तव those में ये are क्या physical है? organs of the body. क्या है? The soul says, मन को how शांति, can my mind attain peace? आत्मा को शांति, किसको शांति चाहिए? In fact, शांति किसको चाहिए? it is wrong to say this. आत्मा को चाहिए। आत्मा जब शरीर में You are a है, soul, तब कहती है ना मुझे शांति and चाहिए। your शरीर से original न्यारी है तो religion मुझे is शांति चाहिए। peace. तो शांति है, शरीर में आती है तब अशांत बनती है ना। तो जब देह अभिमान में आती है तब अशांत होती है। बाकी शरीर से न्यारी है तो वो है ही You should say, शांति। how can I, this तो soul, बाबा कहते बाप experience समझाते peace? हैं, हाँ अशांति कितनी है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले? You definitely ये have to देह अभिमान perform में आप actions. कहते हैं। बाप Only समझाते हैं the Father और explains समझते हैं। these things. आत्मा के और No one in the world has बाकी this ये सब knowledge. शरीर की इंद्रियां That is the path of devotion. मेरे मन को शांति They don't know चाहिए। about this knowledge. वास्तव में ये Only जानना भी the one Father gives you this knowledge. तुम आत्मा हो, Father himself says, धर्म ही शांत है। I come at the confluences of every cycle. कैसे मिलेगी, इसमें भी कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी All are impure at the end of the Iron Age. को ज्ञान का पता नहीं है। This ज्ञान is तो एक ही बाप आकर देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संग this is the kingdom of Ravan. के अंत में सभी पति It is the people ये है रावण of का राज्य। Bharat who burn an effigy of Ravan. बाप पतित पावन The birth of the purifier Father takes place here, and the birth of Ravan is also here. रावण भी तो यहीं आता है? यहाँ से ही पे जाता है ना। बाप भी यहीं आता है तो रावण भी यहीं आता है। बाप को भी हम ही जानते हैं, रावण को भी हम ही जानते हैं। दुनिया वाले तो रावण को नहीं जानेंगे ना। भारतवासी ही रावण को जलाते हैं और रावण को जानते हैं। Ravan makes everyone ये impure, बातें किसकी बुद्धि and this is why they burn भारत में an श्री effigy कृष्ण of him. मनाते हैं। These things श्री are not कृष्ण in the की intellect of जन्मतिथि करते हैं। anyone. अब बाप कहते हैं People celebrate the वास्तव birthday में of Sri Krishna कृष्ण लीला in है Bharat. नहीं। They show the divine activities of Sri Krishna. श्री They कृष्ण sing ने क्या किया? devotional songs, etc. कंसपुरी में जन्म Father says, in fact, कंस को तो there are क्या no कहा जाता है?
divine activities of Sri Krishna. है What did Sri Krishna do? They say that he took birth in the land of Kans. But Kans was a devil. How could devils exist in the golden age? You know that the Sri Krishna soul was in the golden age and that he took 84 births. He is impure at this time and is becoming pure and claiming his status once again. In the same way, you also resided in the land of Krishna. You took 84 births and are once again claiming your status. In fact, the birthday of Shiv Baba should be celebrated. शिव बाबा की जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में There is no divine activity, means Leela of Shiv Baba, who takes everyone from hell into heaven. They say, "O purifier Baba, come, come and take us from hell to heaven." स्थापन करने वाला सुख शांति देने You are our Father, and so we should be in heaven. स्वर्ग में होने चाहिए ना, फिर नरक में क्यों पड़े? Why are we in the vicious world? बाप को भूल गए ना, इसलिए नरक में आ गए. अभी बाप को जानेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे. This is why they call out, "O God the Father, liberate us from this world of sorrow." This is also fixed in the drama. Father says, no one knows this drama. ये भी ड्रामा में नूंद है. बाप कहते इस ड्रामा को कोई भी जानते नहीं. शास्त्रों में In the scriptures, they have written that the duration of the drama is very long. नई दुनिया को पुरानी The new world has to become old and go through the stages of Sato, Rajo, and Tamo. This is an unlimited aspect. You are now once again becoming the masters of the world. You people of Bharat who were in the new world will play your parts of 84 births. You are now becoming pure, whereas all other human beings are impure. This is why they go and bow down in front of the images of those who were pure. वो नमन करेंगे, जो छोटे होंगे वो करेंगे ना. सन्यासी पावन Why would those who are pure bow down to pure beings? Sannyasis are pure, and this is why impure human beings bow their heads when in front of them. Kumaris are pure, and so everyone bows down to them. When those same Kumaris get married and go to their in-laws' home, they have to bow down to others. The unlimited Father has now come to purify everyone. All of them are in the Iron Age, whereas you are at the Confluence Age. You will not have to go to the impure world now. कहाँ जाना है? ज्ञान सरोवर से बाहर नहीं जाना. जाना तो पड़ेगा. You will not have to go to the impure world now. सरोवर में रहते वो नहीं जा सकते. जो आए हैं उनको तो जाना पड़ेगा. तो बाबा कहता
This is the benevolent age. हमारे लिए कलयुग की दुनिया छूट गई, Father comes and benefits हम अभी everyone. कहाँ है? संगम पर। क्यों संगम पर? बाप हमारे साथ है ना। तुम अभी संगम पर हो, अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। बाबा कहता है ये है ही कल्याणकारी युग। अब बाप आकर The Father सबका comes कल्याण करते। and benefits तुम अभी everyone. श्री कृष्ण जयंती You मनाते now celebrate the नहीं birthday of मनोगे Sri Krishna. समझिए, Otherwise, people would जब श्री think कृष्ण जयंती नहीं मनाएंगे that you तो are हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? नास्तिक है, atheists. है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत धाम-धूम से मनाते हैं। इतना तो भक्त भी नहीं मनाता है। We celebrate. This is why we ना celebrate बाबा के बच्चे with great splendor and श्री pomp, कृष्ण जयंती मनाते हैं ना, even greater इतना than धाम-धूम से मनाते हैं। people outside. हम हमारे मनाने में और उनके मनाने में अंतर हो जाता है। हम किस अर्थ से मनाते हैं There is और the वो लोग difference किस अर्थ से between मनाते हैं। our celebrating ये हमारा and क्या their होता है? celebrating. श्री कृष्ण आ रहा है, हम उस दुनिया में जाएंगे, हाँ तो यहीं खेल पाल कर लेते हैं, देख लेते हैं, स्वर्ग का सुख ले लेते हैं। क्या होता है वो सुख तो लेना चाहिए ना। इसलिए यहीं हम अच्छी तरह से हर त्योहार मनाते। सच्ची बात है, हम We बाबा के celebrate बच्चे with the हैं, awareness of heaven. सब त्योहार मनाते हैं। क्या भक्त लोग मनाते हैं, खाली अभी तो नाम है, हाँ? The devotees celebrate just for namesake. और हम लोग अभी देखो, क्योंकि हमको पता है Because संगम युग के ये त्योहार है और अब हम बाबा we के celebrate with बाबा के proper साथ हम वैसे understanding. मौज कर लेते। ये फिर मौज सारे कल्प में थोड़ी मिलेगी, बाबा ही नहीं मिलेगा तो मौज भी नहीं मिलेगी। इसलिए भले सतयुग में मौज होगी, तो बाबा कहते हैं ना सतयुग में तो हर दिन दिवाली है, तो हर दिन दिवाली की क्या वैल्यू होगी? एक दिन आएगी तो उसकी वैल्यू भी होगी, है या नहीं? हर रोज ही दिवाली होगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी? हर रोज ही वही 36 प्रकार के भोजन मिलते होंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी? कभी स्पेशल मिले तो वैल्यू होती है ना उसकी, है ना। भाई आज स्पेशल है, आज स्पेशल है, तो मजा आता है। तो संगम युग पर तो You हम now स्पेशल बाबा celebrate के साथ the हैं, birthday of Sri तो बाबा Krishna. हम बच्चों से Otherwise, स्पेशल आते people would think that you are हैं। atheist. राखी बांधते, अभी In तो 2 fact, महीने से राखी those who don't know their father राखी बांधते or the दिन beginning, में कई बार the आते middle, and the end हैं। of creation are called atheists. ज्यादा ही करते हैं हम लोग, At this time, all have become है या orphans. नहीं? ज्यादा ही थोड़ी मौज There is quarreling in every home. प्यार है ये, They don't hesitate भैया in संगम युग में beating ये one प्यार another. है ना। This is why वेस्ट कुछ भी this is also called a world अभी of देखो atheists, सतयुग में सारे those कल्प तो हमें who don't हमसे know मिले, the Father. अभी तो मिले हैं, You are the तो ones बोले who चलो know Him. आपस में बैठ लो, खा लो, पी लो, You now understand फिर तो that you had stone intellects बाबा कहते हैं and that the Father तुम is अभी श्री now कृष्ण जयंती making मनाते your नहीं तो intellects लोग divine. समझेंगे ये नास्तिक है। नास्तिक There is वस्तु no तो more उसको कहा difficulty जाता है than that. जो अपने बाप को नहीं जानते Father says, और simply आपको नहीं study जानते, रचना के for आदि an और hour. अंत को नहीं जानते। Consider ये yourselves to तुम्हें be सब souls छोड़ and के remember सब me, बंद your हो Father. जाते हैं। If you remember bodies, सब घर में
You will remember your worldly relatives. If you remain soul conscious, you will remember me, your father. बाप को न जानने वाले This is तुम हो a जानने वाले, vicious ये world. तुम समझते हो Everyone हम is choking in this पत्थर की ocean of भांति poison. थे। बाप हमको Vishnu पारस is shown lying in an ocean of और milk. कोई तकलीफ की They बात say that there will be पापा rivers of ghee flowing there. पारस बुद्धि बना रहे हैं Here, और कोई तकलीफ की बात you नहीं। can't even buy paraffin. There is so much difference. Your children क्या should कहते have so much happiness. क्या कहते बाप Father सिर्फ कहते is also called the boatman. क्या कहो The thing, take my boat across. है याद करो All of these याद के are boats, and only the one Father is the boatman. सिर्फ कहते हैं You will shed your bodies here, and you souls will be taken across क्या to the land of peace. 1 घंटा पढ़ो कब पढ़ो Then, from there, हैं you will be sent to the land of happiness. का तो क्या क्या विधि सुना The Supreme Father, the Supreme Soul, is also called the boatman. देखो हमारी माताएं भाई बहन सारे दिन मुरली सुनते People sing praise of the Father क्या सुनते in many सारे दिन मोबाइल different ways. अभी इसकी मुरली सुनी अभी इसकी सुनी अभी इसकी सुनी अभी इसकी सुनी You are now becoming pure, सुबह से and the masters of the pure world, उसकी सुनी उसकी सुनी उसकी सुनी Shri Shri Shiv Baba, has बाबा come की नहीं सुनी to make you elevated. है ये नहीं उनको पूछो पॉइंट क्या सुनी God Himself says, है this is मुरली सुनी a corrupt उसकी world. सुनी उसकी सुनी उसकी मैं बोलती एक ही सुनो You are now सुनो following the Srimad of ले नहीं the Supreme Father, the Supreme Soul, इधर उधर नहीं ये भी एक कर्ण रस and becoming the most ओरिजिनल elevated. बुद्धि में नहीं आती ये भी कर्ण रस हो गया अभी टाइम पास करते इसकी सुनी उसकी सुनी उसकी सुनी उसकी सुनी These are such लेकिन बाबा ने क्या incognitive कहा and entertaining matters, and only you children understand them. विधि से पढ़ो कोई भी कार्य जब विधि से किया जाता है ना तो उसकी सिद्धि मिलती है तो बाबा ने हमारी विधि क्या बनाई है Others would not be able to सुबह क्लास understand them. क्लास के टाइम पर आओ मुरली सुनो पढ़ो फिर जाओ ये विधि है You know बाकी that सारे the दिन तो sapling of the deity religion is now being planted. इमरजेंसी होती है तो बाबा बोलता है चलो भाई बात ऐसी है लेकिन नहीं इमरजेंसी Those who belong to the deity religion and were then converted to other religions will come and become Brahmins. नहीं मिलती है बाबा ने You cannot claim the inheritance of heaven from the Father टाइम पर without becoming Brahma Kumars and Kumaris. के विधि से मुरली सुनो तो सिद्धि मिलेगी You Brahma Kumars and Kumaris are now claiming the inheritance of heaven. बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो The more effort you make and the more you inspire others, the higher the status you will claim. समझ मुझ बाप को याद करो शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंध की याद आएगी Not everyone can do the same. तो मुझ बाप What would the consequence be if you don't study fully?
विषय सागर में If you shed खिसकाते रहते हैं। your body now, विष्णु को you खीर will go सागर to में heaven, गिराते but कहते हैं वाह you will receive a very ordinary status घासलेट भी नहीं among the मिलता है। subjects. घासलेट बंद हो गया भाई, मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है। If you belong to the Father मिलता है क्या? and study नहीं well, मिलता है। you can claim a royal status. घासलेट भी नहीं मिलता है, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया ना है। If you don't study, it will be understood that it is not in your fortune. If you remain pure and steady, you will claim a high status. When you become impure, you are unable to remember the Father. There are many like this. Everything depends on when you become free from your karmic bondage. Everything depends on when you become free from your karmic bondage. When both wheels are pure, it will then go well. If both remain pure, they can sit on the fire of this knowledge. Otherwise, there will continue to be conflict. Some children say, Baba, we know that Sri Krishna is the first prince of the golden age, and so why should we not celebrate? Baba says, Acha, I can call the soul of Krishna, and that soul can play and dance. What else would he do? The gops and gopis exist here. There, the princes and princesses will meet and dance with each other. They will play golden flutes. You will see all of those fun and games at the end. All of that part will continue. They were shown to you in the beginning, and you began to make effort. Now, at the end, you will again begin to have visions of what status each one will claim. Only you know this. The Father sits here. The Father sits here and explains all of these secrets. People ask you, do you believe in the Vedas and scriptures? Tell them, yes. Why would we not believe in them? All of that is the paraphernalia of the path of devotion. There is none of this knowledge in them. Only the One gives this knowledge. When you receive this knowledge, you automatically stop doing devotion. When you go to a temple, it is in your intellects that Lakshmi and Narayan are now going to rule in the new world once again. Father tells you, children, that you have to fulfill your responsibilities to both sides. संदेशी के तन में आती है, बुला सकते, आकर खेल पाल करेगी, रास
करेगी और क्या करेगी, हम खुश होंगे, है ना। वो करेगी तो हम खुश होंगे, हम इंजॉय करेंगे। गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, while living गोप at गोपियां तो home. यहाँ ही होते हैं, You have to यहाँ ही रास करेगी। become pure. सत्युग में थोड़ी करेगी, क्योंकि वहां गोप गोपियां ही नहीं है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। अब सोने के महल बनेंगे तो मुरली नहीं सोने की बजाएंगे। बाबा कहते वहां तो सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। While ये सब living at home, you शुरू have में to दिखाया become गया pure. कि तुम पुरुषार्थ में लग गए और फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार शुरू होंगे। कौन कौन किस पद को पाएगा, क्या साक्षात्कार होगा? Srimad says, become सुने, fully अंत में pure. साक्षात्कार क्या होगा, कौन किस पद को पाएगा, ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो Become हाँ, complete क्यों नहीं मानते? Vaishnava ये सब and परमेश्वर claim की सब the kingdom of इसमें कोई ज्ञान the land of ज्ञान Vishnu. देने वाला तो एक ज्ञान सागर बाप है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही While living at home, छूट जाती है। you have to become pure. तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। Srimad says, बाप बच्चों become को समझाते fully हैं। pure. क्या समझाते बोलो, बाप बच्चों को समझाते, माताएं बोलो क्या समझाते बाबा, आपके काम की बात बोलिए, बोलो माता क्या समझाते बाबा। बाबा समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना, सुना, बैलेंस रखना है, ऐसे नहीं कि उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। Srimad says, श्रीमत कहती है, become fully pure. श्रीमत कहती Srimad है says, become पूरे पवित्र बनो। fully pure. अच्छा, पूरे की डेफिनेशन क्या है? बाबा कहता है, श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो। पूरे की डेफिनेशन क्या है? Srimad says, become fully pure. मन में भी कोई ऐसा अपवित्र संकल्प न आए, पूरे पवित्र बनो। Become complete Vaishnava and claim the kingdom of the land of Vishnu. और विष्णुपुरी का राज्य लो। विष्णुपुरी का राज कौन लेगा? जो पूरा वैष्णव बनेंगे, पूरा पवित्र बनेंगे, वही विष्णुपुरी का राज्य लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। Essence for inculcation. First point. Settle your karmic accounts with yoga and become pure. योग द्वारा Settle your karmic accounts with yoga and become pure. Sit on the fire of knowledge. Become a complete Vaishnava, that is, completely pure. Second point, remain stable in your
original religion of peace धर्म में स्थित remind everyone of the land of रहकर peace. की याद दिलानी Never become peaceless. कभी भी अशांत Blessing is, may you be a master seed and stabilize in your stage of being beyond sound आवाज and से experience एक all स्थिति virtues, को just as a whole tree सर्व is गुणों का merged अनुभव in its करने वाला seed. In the same way, बीज रोप all the special virtues of the confluence stage are experienced in your stage of being beyond sound. मास्टर To be a master, to be a master seed means not just to जैसे बीज be में सारा peaceful, अंश but समाया हुआ together होता है with peace. It also means to have आवाज से this प्रेरित knowledge स्थिति में and to experience ब्रह्मयुग के all the सर्व main विशेष virtues, supersensuous joy, विशेष गुणों love, अनुभव bliss, में आते हैं and power, etc. संगम युग के Not only सर्व will विशेष you गुणों yourself में आते experience these, but मास्टर all बीज other रोपने के souls बाद will also experience all the virtues शांति from के your साथ face. अंतिम All the virtues are merged आनंद in this one virtue. आदि आदि सर्व Slogan is गुणों का imbibe goodness, करना but do not be ये अनुभूति impressed स्वयं by goodness. लेकिन अन्य Avyakt आत्माओं signal. के चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव Finish the seed of करती impurity एक and गुण become सर्व गुण completely समाये clean, mean pure. स्लोगन The original धारण करो and eternal sanskar of you Brahmin souls is purity. सुना When you use this natural sanskar, impurity नहीं हो जाओ should not even emerge in your dreams or thoughts. लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ जाओ Now, अव्यक्त go ईश्वर even beyond having such thoughts and become victorious over them by making purity your natural sanskar. आत्माओं का अनादि आदि संस्कार There should then be no need to make effort in this subject. अपवित्रता इमर्ज न हो संकल्प आवे और विजयी बनो इससे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना ले तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता Om Shanti. Thank you, Baba. रहेगी अच्छा आज दादी जी की विशेषता 19 गुणग्राही बनने में बड़ा सुख है गुणग्राही बनने में बड़ा सुख है किसी का अवगुण न देखो सोचो भी नहीं तो सुखी अवगुण सोचो भी नहीं तो सुखी जिस घड़ी जिसका अवगुण देखा सोचा तो वो हमें दुखी बनाता है तो अगर दादी को प्यार का रिटर्न देना है तो प्लीज कभी दुख नहीं लेना बाबा से जो वरदान मिले वही हमारी सूरत और मूरत है मुरली में रोज जो वरदान मिलते हैं उसको भी अगर हम दिल में रखें तो भी ब्राह्मणों की शक्ल देवताओं से भी अच्छी दिखाई देगी वरदान स्मृति में रखे तो ब्राह्मणों की शक्ल देवताओं से भी अच्छी दिखाई देगी अच्छा ओम शांति सुनी बाबा की मुरली अच्छा एक ओम शांति अभी बाबा के घर में देव दर्शन जो हमारी माताएं सेवादारी माताएं वहाँ रहती थी
उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रिनोवेशन चल रही थी और अभी वो पूरा हो गया है। तो आज से माताओं को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने में थोड़ा थोड़ा पहले बताया जाएगा कि किस किस को शिफ्ट करेंगे। हर एक माताएं अपने पास तैयारी रखें कि जब भी उनको बोला जाए आप अपने स्थान को शिफ्ट करो तो उसमें जा सके। और बहुत ही अच्छा माताओं के लिए मैं देख के आई, बहुत अच्छा वहाँ पर व्यवस्था की गई। एक एक बात का बहुत ध्यान रखा है। बाथरूम भी बहुत अच्छे बनाए हैं और अलमारी कबट भी बहुत अच्छे बनाए हैं वहाँ पर। और फिर गद्दे भी दो दो डाले। हमारा सुरेश भाई बोलता है हमारी माताएं सेवा करते करते उनकी कमर में दर्द हो जाता है, तो दीदी मैंने दो दो गद्दे डाले। वाह, माताएं तो चढ़ गई हमारी। अपने लिए खूब ताली बजा लो। बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, तो सब तैयार रहना। जब भी जिसको बोला जाए आज यहाँ चेंज करो तो चेंज कर ले। ओम शांति। ऐसे चेंज करो, यही मेरे को इनॉग्रेशन तो होना चाहिए ना। कल गुरुवार है, गुरुवार इनॉग्रेशन कर सकते। हाँ, कल से भट्टी शुरू होने जा रहा है, तो बाबा के बच्चे आज से आना शुरू हो रहे हैं और कल से मुरली क्लास हार्मनी हॉल में रहेगा और अमृत वेला योग भी ऊपर ही रहेगा। हमने जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। अपने हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
को